So hello guys, welcome to my channel Study Up. Okay, so today I will start the next part of the water management system, the removal of hardness of water. Okay, so let's start. So why to remove of hardness of water, whether may be temporary or maybe permanent. So because the hard water, what I told in the yesterday class, very harmful to all of us, paper industry, leather industry, tanning industry, pharmaceutical industry, in our cooking food also, in our hair also, so many things, in also leathering of producing leathering of soap, so many disadvantages are there of hardness of water. So in that case, basically the most of the companies were whose requirement of water is very more, so in that case they suffer most. So for that reason we have to remove the hardness of water is required. So removal process is two types, temporary and permanent. How to remove the temporary hardness of water? I am just giving us simple steps. What? Just boiling. Just boil करो जो hardness है. Suppose just boiling and also put the flask. Temporary. The temporary hardness remove. Temporary hardness কিভাবে remove করব? Removal. Temporary hardness. Okay. But just one process, boiling. I have told boiling. One thing is clot process. So what is the temporary hardness? What is the due of temporary hardness is due to the presence of bicarbonate salt. जो bicarbonate salt है, that is calcium bicarbonate, any metal bicarbonate. So metal bicarbonate ধরো calcium bicarbonate. প্রসেসটা কি দেখো, metal bicarbonate salt. ये जो मेटल है इसमें क्या है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ओके, मैग्नीशियम हो सकता है. ताकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट, ओके, जस्ट बॉयल करने का बाद क्या होगा बॉयल करने का बाद, और समटाइम्स व्हाट यू लर्न, ये जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, वो क्या होगा, the calcium bicarbonate. I am not written out here. M for calcium, M for metal, calcium, iron, magnesium. It is not in the book. In the book, it is given CaHCO3, FeHCO3 in the book. Okay. So if you heat it, just boil it. So what is out here? All the metal, that is magnesium, calcium, iron, carbonate, is a metal carbonate. ये डिजोल्व होगा, प्रेसिपिटेट होगा वाटर में. उसके बाद क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगा और वाटर जो है, इफ यू फिल्टर इट देन इट विल बी प्रेसिपिटेड. যেমন চা ছাঁকনিতে চা ছাঁকি আমরা, প্রেসিপিটেড, ইট উইল বি ফিল্টার্ড অ্যান্ড ওয়াটার উইল বি ক্লিয়ার. ইন দিস ওয়ে দ্য temporary soft hardness can be removed. Here in M for magnesium, carbonate, iron, carbonate, calcium, carbonate, it will be dissolved, it will be precipitated. Okay. So sometimes in case of magnesium carbonate, we can sometimes use some lime process বা क्लार्क process. lime का मतलब क्या है, CaOH, इसका साथ CaOH जो है 2 times ऐड करो बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ. ऐड करने के बाद क्या होगा, सेम थिंग, CaCO3 होगा अथवा Na2SO4 होगा. हाँ, CaCO3 और Na2SO4, सोडियम कार्बोनेटটা ये प्लस Na2SO4 और CaCO3 ये डिजोल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा, ये सॉल्ट रहेगा वाटर में. सो इट विल सेपरेटेड आउट. सो इन दिस वे टेम्पोररी हार्डनेस विल बी रिमूव्ड. क्लियर? बस. समटाइम्स यू कैन यूज कैल्शियम, जगह चून बोला है, चून लाइम, तो CaOH 2 times
और Na2CO3 यू कैन यूज इट। इट्स टेम्पररी के लिए, परमानेंट के लिए Na2CO3 भी यूज करना पड़ेगा। आई एम कमिंग लास्ट। सो जस्ट बॉयल। नेक्स्ट कम permanent hardness. How to remove of permanent hardness. टेम्पोररी हार्डनेस इजी था, जस्ट बॉइलिंग करो, क्लार्क प्रोसेस करो, यूज़ करो। मैग्नीशियम के लिए थोड़ा जो कार्बोनेट नहीं हो सकता है वो मैग्नीशियम का साथ ऐड करना पड़ेगा थोड़ा। ये है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ये बहुत सारा प्रोसेस है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। एक फिगर है तुम्हारा बुक में, आई विल गिव द फिगर आउट हियर। ओके, जस्ट ये क्या है? डू अंडरस्टैंड व्हाट इज थिंग। परमानेंट हार्डनेस can be removed by one thing is permuted process. I have told you permuted क्या है, zeolite क्या है, base exchange क्या है। I have told you in yesterday video. Formula of permuted, formula of zeolite I have given. Sodium, calcium, aluminum, orthosilicate I have done. The first softening of hard water एक प्रोसेस है, तुम्हारा बुक में है। I will not, अच्छा आई एम ड्राइंग लेटर जो है। फर्स्ट सोडियम परमुटेट जो है, सोडियम परमुटेट मीन्स परमुटेट प्रोसेस मीन्स सोडियम परमुटेट और कैल्शियम परमुटेट और मैग्नीशियम परमुटेट, व्हाट एवर यू कैन यूज। परमुटेट मीन्स जियोलाइट, यू कैन राइट इट। परमुटेट का फॉर्मूला आई हैव राइट यू, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, दैट इज द परमुटेट। then you can tell it sodium zeolite or sodium permutate. Main mudda, main chief mechanism of the reactions are sodium permutate or sodium zeolite. Sodium permutate process or sodium zeolite. You can write it plus. I am writing sodium zeolite first. एक परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है, उसका साथ क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड अथवा सल्फेट है। सपोज मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। पहले आई हैव टू व्हाट माई एक्चुअल एम, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये जो मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन जो है ना, दिस आयन should be replaced by sodium. This is the main thing. Calcium ion, iron ion and magnesium ion और Fe जो भी हो सकता है, these are the main cause of permanent hardness. तो ये जो सोडियम परमुटेट का साथ मैग्नीशियम जो सल्फेट है और क्लोराइड है, तो इसका साथ रिएक्शन क्या होगा, जस्ट मैकेनिज्म समझो, जस्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। सोडियम परमुटेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, इसमें ये मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, जा हो व आयरन हो, वो चेंज हो जाएगा। ये मैग्नीशियम का सब वो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जा होगा, ये मैग्नीशियम परमुटेट होगा, कैल्शियम परमुटेट होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम परमुटेट देन मीन्स इसमें क्या है, कैल्शियम परमुटेट, ये है आयरन परमुटेट। जो वाटर में जो ये सॉल्ट डिजोल्व है, वाटर सो मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन जो परमुटेट है वो क्या होगा, सोडियम का साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा, सोडियम का। देन NaCl, Na2SO4 जो भी MgCl2 व्हाट एवर फॉर्म, यहाँ पर MgCl2 Na2SO4 ऐसे सॉल्ट जो है ये हो जाएगा। क्लियर, NaCl MgCl व्हाट एवर में भी ये सब सॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर Na2SO4 Na2 सोडियम होगा, Na2 सल्फेट के Na2CSO4, क्लोराइड के MgCl2, ओके, NaCl होगा,
NaCl, ओके, NaCl। तो MgCl को तो ये NaCl चेंज होगा, इसके बदले NaCl हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स मेन MgCa और आयरन, इट विल बी, दैट मीन्स अच्छा से समझो, Mg प्लस प्लस Ca प्लस प्लस Fe प्लस प्लस मे बी ट्रिपल प्लस हो सकता है। दिस आयन will be replaced by sodium ion. This is the main thing, mechanism. तो सोडियम परमोटेट से मैग्नीशियम परमोटेट हो जाएगा, तो मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा, तो वाटर और नहीं हार्डनेस नहीं होगा। दिस इज द मेन थिंग, ओके। NaCl MgCl2, तो NaCl हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। दैट मीन्स सोडियम परमोटेट जो है वो यूज करने से ये MgCa Fe will be replaced, and some revival is also you have to take place. What is this? After some times, if all the sodium ion is being replaced by MgCa and Fe, and after certain time the process will be continued and it will be exhausted. So permutate will be exhausted. So in that case, some sodium permutate will have to be improved. So in that case, NaCl solution we have to add NaCl solution. That means कैल्शियम परमोटेट के साथ ये जो कैल्शियम परमोटेट हो जाएगा, आयरन परमोटेट, मैग्नीशियम परमोटेट जो हो, इसका साथ अगेन टू रिवाइव कर, इसका है ये जो हेडिंग होगा रिवाइवल। रिवाइव करने के लिए क्या हुआ, आफ्टर certain period of time, all the sodium permutate, sodium will be exhausted, there will be no sodium permutate there, so the reaction should not further proceed. So in that case, this magnesium permutate, calcium permutate, iron permutate will be produced in the water solution. So this permutate will be changed, exchange, so magnesium permutate react with NaCl. So I have to add NaCl. फिगर में हम दिखा देंगे, फिगर में, ओके, फिगर हम दे देंगे उस पर। तो मैग्नीशियम परमोटेट है, कैल्शियम परमोटेट है, आयरन परमोटेट है, उसका साथ NaCl रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, अगेन सोडियम परमोटेट, मैग्नीशियम परमोटेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, या अगेन इट विल फॉर्म सोडियम परमोटेट, देन MgCl2 फॉर्म हो गया, MgCl, ओके, बस CaCl2 फॉर्म हो जाएगा। तो अब अगेन इट विल रिवाइव एंड रिएक्शन अगेन टेक प्लेस। सो रिएक्शन के रिवाइव करने के लिए यू हैव टू ऐड NaCl, so 10% NaCl solution, 10% NaCl solution must remind it. Next will come Calgon process, okay, Calgon process. इसका बाद होगा ion exchange process. Calgon process is one of the important process. It is used in the industry. It is most important thing. In this case, what happens? Same things. Our objective is to change the calcium, iron and आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो आयन है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा सोडियम के लिए, सोडियम के साथ, सोडियम परमोटेट। कैल्गन क्या है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, उसका नाम है क्या है, कैल्गन। तो कैल्गन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो क्या है परमानेंट हार्डनेस जो परमोटेट प्रोसेस जो है उसमें वो जो उसका सॉल्ट को प्रेसिपिटेट, इट इज प्रेसिपिटेटेड, बट हेयर कैल्शियम और मैग्नीशियम or ion do not precipitated. In this case, do not precipitated. So in this case, what happens? Remind it, a complex salt is formed. A complex salt is formed, nothing else, and it is widely used in industry. तो व्हाट इज द रिएक्शन? कैल्गन प्रोसेस क्या? कैल्गन क्या है? कैल्गन का तो बाजारी नाम है, इसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम Na2 Na4 Na2 Na4 PO3 whole 6, यह सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, a calgon. Now I have to use calgon in हार्ड वाटर यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा रिएक्शन? तो इसमें हार्ड वाटर का मतलब क्या है? एनी क्लोराइड सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड
or magnesium chloride, whatever you can tell. Calcium chloride, CaCl2, or magnesium chloride or iron chloride or sulfate. Clear? See out here. What happens out there? This calcium will be replaced by sodium. So it is formed, though here will no formation of precipitation. What will happen? A complex salt will form Na2, clear? Na2Ca PO3 होल 6 ये जो है ये होच्छे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसका साथ क्या प्रोड्यूस होगा? ये जो कैल्शियम यहाँ पर आ गया तो ये सोडियम यहाँ पर चला जाएगा, टू NaCl फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा? NaCl, टू NaCl हो जाएगा। Na2 Na4 ओके कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। इन केस ऑफ इफ यू यूज कैल्शियम सल्फेट, इफ यू यूज कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है। इन दैट केस it will form Na2SO4. Yes, it will form Na2SO4. So in this case same thing will happen out here in this, and plus इसका बदल सोडियम Na2SO4, and this is the complex salt will produce, and here Na2SO4, here NaCl ऐसे हो जाएगा। That is CaCl2, CaSO4, FeSO4 वो जिस परमानेंट हार्डनेस का ड्यू रीजन है वो हट जाएगा ये कैल्गन यूज करने के बाद। दिस इज द कैल्गन प्रोसेस, इट इज यूज इन द इंडस्ट्री। क्लियर? एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so last process is ion exchange process. Ion exchange process. What is ion exchange process? In this ion exchange process, you must remember that now at present there are so many synthetic ion exchange resin can be obtained in the market. So there are two type of ion exchange resin. One is cation exchange resin, RH, we can tell short में, और anion exchange resin NR4OH, अटा H अटा OH, NRH NR4OH दोनों cation exchange resin और anion exchange resin मिलता है। क्या होता है? जो परमानेंट हार्डनेस जो है, इन परमानेंट हार्डनेस व्हाट हैपेंस? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट है, वो आयरन सल्फेट का अंदर फर्स्ट it is processed through, this hard water is processed through cation exchange resin RH. So RH plus calcium chloride, that is the hard water is reacted, and after reaction what will form? This R will remove this Ca, then R2Ca will form out here. That means यहाँ से calcium हट गया, R2Ca will form, and this Cl and H ACl. Not required to balance it, just concept. Then RCl, R2Ca plus HCl. HCl जो होता है, तब HCl इसमें जो कैल्शियम सल्फेट होगा तो R2Ca plus H2SO4. In case of सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें होगा H2SO4. क्लियर? तो फर्स्ट cation exchange resin में जब पास किया, when I pass the hard water through cation exchange resin in first step में what happens? It happens R2Ca will form and HCl or H2SO4 successively will form. That is, will be acidic. The water will be gained, it will be acidic in nature. So to remove this acidic condition, acidic nature, this again I have to pass with anion exchange resin. So this HCl
with anion exchange resin, that is NR4OH. Two step, first step, this is the first step. फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, वो जो एसिडिक मीडियम को जो सोल्यूशन मिलता है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन में पास करना होगा। तब एनायन एक्सचेंज रेजिन NR4OH HCl क्या होगा, ये जो Cl है NR4Cl उसका साथ ये बन गया एंड दिस H प्लस OH क्या होगा H2O. That means whatever the removal of hardness, the cause of hardness is this chloride and sulfate removed. So the H2SO form and sulfate chloride जो आयन है वो sulfate ion chloride ion is removed by anion exchange resin and ultimately soft water will be obtained. This is very important method. So I have discussed three methods: Calgon method, permuted method, ion exchange method. Even a problem, no problem. And in this process, whatever the water is formed, it is deionized water. Okay, deionized water. All the ion will be removed. Clear? So guys, so my beloved students, there I draw my ends of the water second block, and some EDTA method and some numerical problems will be discussed in the third and final blog. So please subscribe it, like it and share it to your friends. Okay, good night.